Samrupakadamyam dadati savedantikam vandeham Shri Guru Shri Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sadhana Raghunatham Pitam Tam Sajivam Sadhvetam Savadhutam Pajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakamavitamsha Namo Vishnu Padre Krishna Prishtavatale Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Namaste Saraswati Deva Bhagavane Gurcharina Nirvisheshana Adivasha Prishtarina Hare Krishna Fauna Sinna Dinvandana Jagataya Krishna Gopayanta Dharmasure Taptakanchana Gauranga Shri Radha Vrindavaneshwari Krishna Sutta Devi Gunami Hari Kriya Panchakal Pataru Vasandu Dev Chaparitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Swami Gauravattanda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Okay, Hare Krishna everyone. We are starting from the third chapter, which is our real life. The Bhagavad Gita says that out of many thousands of human beings, one may try to make perfection of his life. Man is an animal, but he has one special prerogative, rational thought. What is that rational thought? Reasoning power, argument. Now, reasoning power is there in dogs and cats as well. Suppose a dog comes to you, if you say hut, he will understand. The dog will understand that you don't want him. So he has some reasoning power. But what is the special reasoning power of the human being? As far as the bodily necessities are concerned, the reasoning power is there even in the animal. If a cat wants to steal some milk from your kitchen, she has very nice reasoning power. She's always looking to see when the master is out, she can take. So, for the four propensities of animal life, eating, sleeping, mating, and defending, there is reasoning power even in the beasts. Then what is the special reasoning power of the human being, by which he is called the rational animal? Yes, Puji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. The special reasoning power is to inquire, why am I suffering? This is special reasoning. The animals are suffering, but they do not know how to remedy the suffering. But human beings are making scientific advancement and philosophical advancement, cultural advancement, religious advancement, progress in so many lines because they want to be happy. Where is the point of happiness? This reasoning power is specially given to the human being. Therefore, in the Gita, Krishna says, out of so many men, one may know me. Hare Krishna. Generally, the people are just like animals. They simply do not know anything beyond the necessities of the body. How to eat, how to sleep, how to mate, and how to defend. And the Bhagavad Gita says, out of many thousands, someone may develop this reasoning power. Why am I suffering? He asked this question, why am I suffering? We do not want to suffer, but suffering is forced upon us. We do not want too much cold, but too much cold and too much heat are forced upon us. Hare Krishna. When there is some impetus to awaken this reasoning power, it is called Brahma Jigyasana. Brahma Jigyasa मतलब inquire करना भगवान के बारे में. Brahma Jigyasa. This is found in the Vedanta Sutra. The first verse says that now this human form of life is meant for asking the question of how to solve the problem of suffering. So Krishna says that this special prerogative of the human being is not awakened very easily, except by some good association. Just as we have this Krishna conscious association, if we attain such association where nice things are discussed, then that awakening of reason, that special prerogative of the human being will come. As long as this question does not arise in one's mind, he should understand that whatever activities he is doing will lead to his defeat. He is simply leading an animal life, but not when these questions arise. Why I am suffering? What I am suffering? Am I meant for suffering? Am I meant for troubles? Yes.
I'm undergoing troubles by nature's laws and by the state's laws. So the question of freedom is how to become free from all the troubles. The Vedanta Sutra also says that the soul, my actual self, is by nature joyful. Yet I am suffering. Lord Krishna further says that when these questions rise, gradually one comes to God. Those who have awakened to these questions are said to be on the path of perfection. And when the question of God and our relationship with God comes, that is our final perfection of life. Yes, Prabhu. Prabhu? Yes, Prabhuji. Yeah, please go ahead. Lord Chaitanya Mahaprabhu. No, from this the- one. Now, no, this one. Now Krishna says. Now Krishna says that out of many thousands of people, one may try to make perfection of this life. And out of many million of such persons on the path of perfection, only one may understand Krishna. So understanding Krishna is not very easy, but it is also the easiest. It is not easy, but at the same time it is easiest. It is the easiest if you follow the prescribed forms. Anshumanti? Lord Chaitanya Mahaprabhu has introduced this chanting of Hare Krishna. He has not exactly introduced it. It is in the scriptures. But he has specially propagated this formula. In this age, this is the easiest method of self realization. Simply chant Hare Krishna. It can be done by everyone. In my classroom, I am perhaps the only Indian. My students are all Americans and they are taking part in the chanting very nicely, chanting and dancing. That means that in any country, in any place, this can be performed. Therefore, it is the easiest. You may not understand the philosophy of the Bhagavad Gita, that is also not very difficult. But still, if you think that you cannot understand, you can still chant very easily. Hare Krishna, Hare Krishna. If we want to understand God, Krishna, this is the beginning. The easiest beginning, simply chanting. Now there are my ISKCON institution. This institution is open a little over a year, but some of the students, by simply chanting, by the grace of Krishna, have advanced in such a way that they can talk about the science of God and they will very easily answer those human questions. So, this is the easiest method of transcendental meditation. Krishna says that out of many millions of people, one may understand him, but by chanting of this Hare Krishna, as introduced by Lord Chaitanya, chanting and dancing, you can understand Krishna within a very short time. Knowledge begins not from Krishna, but from things which we are accustomed to see every day. Land is gross. If you touch it, you can feel its hardness. But as soon as the land becomes still finer, it is water, and the touch is soft. And then again, from water to fire is still finer. After fire, electricity, the air is still finer, and after air, the sky, ether is finer still. Beyond ether, mind is still finer, and beyond the mind, intelligence is still finer. And if you go beyond intelligence to understand the soul, it is finer still. From these elements, people have discovered so many sciences. There are many scientists, for example, who are soil experts. They can say by analyzing a particular type of earth, what kind of minerals are there. Somebody seeks out silver, somebody seeks out gold, somebody seeks out mica. This is this is knowledge of gross things. If you go to finer substances, then you study water or liquid things such as petrol and oil. Go is still finer, and from water you will go to fire and electricity. If you study electricity, you'll have to study all sorts of books. And from this finer fire, you will come to air. We have so much advancement in our airplanes. We are studying how they move, how they are made. Now it's Sputniks and jets, so many things are discovered. Yes, Prabhu. Next comes the study of ethereal, electronics, ethereal transformations from one thing to another. Then finer still is the mind, psychology and psychiatry. But for intelligence, rationalism,
There is only a little philosophical speculation. And what about the soul? Is there any science of the soul? The materialistic have none. Material science has advanced to the study of the ether or the mind and intelligence, but there is no advancement beyond that. Beyond intelligence, they do not know what exists. But here in the Bhagavad Gita, you can find it. The Bhagavad Gita begins at the point after intelligence when Arjuna was perplexed at the outset. His intelligence was perplexed whether to fight or not to fight. Krishna begins the Gita from the point where intelligence fails. How does knowledge of the soul begin? It is just like a child is playing. You can understand this child's body is now so small, but one day this child will be grown up like you or me, but the same soul will continue. So by intelligence, you can understand that although the body is changed, the soul is there. The same soul which was existing in the body of the child is still continuing in the body of the old man. Therefore, the soul is permanent and only the body has changed. This is a very easy things to understand. And the last change of this body is death. As at every moment, every second, every day, every hour, the body is changing. So the last change is when one cannot act with the body. And so he has to take another one. Just as when my cloth is too worn out or old, I cannot put it on. I have to take a new cloth. It is similar with the soul. When the body is too old or unworkable, I have to change to another body. This is called death. This is the beginning of the Bhagavad Gita, when the preliminary knowledge of the soul is there. And you will understand that there are only a few who can understand the existence of the soul as permanent and of the body as changeable. Therefore, Bhagwan, Lord Krishna, says that out of many, many millions of people, one may understand it. But still, the knowledge is there. If you want to understand it, it is not difficult. You can understand it. Ishu is there. Yes, Prabhu. Yeah. Mataji, you can go. Then I'll continue at end. Okay. Or should I read now? It's okay. Yes, okay. Now we should inquire into the existence of the ego, the finest material substance. What is ego? I am pure soul, but with my intelligence and mind, I am in contact with matter and I have been identified myself with matter. This is false ego. I am pure soul, but I am identifying falsely. For example, I am identifying with the land, thinking that I am Indian or that I am American. This is called ahankar. Ahankara means the point where the pure soul touches matter. That junction is called ahankara. Ahankara is still finer than intelligence. Krishna says that these are the eight material elements: earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. False ego means false identification. One's nascent life has begun from this false identification, thinking that I am this matter, although I'm seeing every day, at every moment, that I am not this matter. Soul is permanently existing, while matter is changing. This misconception, this illusion is called ahankar, false ego. And your liberation means when you are out of this false ego. What is the status? Ahem Brahmasmi. I am Brahman. I am spirit. That is the beginning of liberation. Hare Krishna. Yes, Ishu. Of course, one may be suffering from disease, from fever, and the temperature may come down to normal 98.6 degrees. So he's now normal. But that is not the cure. Suppose for 2 days he has 98.6-degree temperature, but the slight change of diet, a slight change of behavior, the temperature rises immediately to 100. Relapse. Similarly, simply purifying the mind, rejecting the false ahankara identification. I'm not this body. I'm not this matter. I'm soul. This is not liberation. It is the only beginning of liberation. If you stick to this point and continue, just as might continue activities and keep temperature at 98.6 degrees, then you are a healthy man. Hare Krishna. Hare Krishna. For example, in the West now, there is some propaganda for taking intoxication. The people want to forget the bodily existence.
But how long will you forget? There will be a relapse. You can forget for 1 hour or two by intoxication and think that I am not this body. But unless you are actually on the platform understanding yourself by knowledge, it is not possible to continue. Still, everyone is trying to think I am not this body. They have experienced that they are suffering so much on account of bodily identification. And so, if only I could forget my bodily identification. Yes, Rohit. This is only a negative conception. When you actually realize yourself, simply understanding that you are a Brahman will not do. You have to engage in the activities of Brahman. Otherwise, you will fall down. Simply flying very high is no solution to the problem of going to the moon. Nowadays, the fools are trying to go to the moon, but they simply go 240,000 miles up from the earth, touch the moon, and return. They are very proud. There is so much talk of aeronautics, crowds, and meetings and conferences. But what have they done? What are 240,000 miles in that vast sky? If you go 240 million miles, still you are limited. So this will not do. If you want to go high, you must have permanent shelter. If you can take the rest, if you can take rest there, then you cannot fall down. But if you have no rest, then you will have to fall down. The airplane goes high, 7 miles, 8 miles up from the earth, but it comes down immediately. Yes, to you. So simply understanding Ahankara means no more than understanding the false identification. Simply understanding that I am not matter, I am soul is not perfection. The impersonalist, the void philosopher simply thinks of the negative, that I am not this matter, I am not this body. This will not stay. You have to not only realize that you are not matter, but you have to engage yourself in the spiritual world. And that spiritual world means to be working in Krishna consciousness. That spiritual world, that functioning of our real life is Krishna consciousness. Yeah, Anshuman. False ego. I have already explained. It is neither matter nor spirit, but the junction, where the spirit soul comes into contact with matter and forgets himself. It is just as in delirium, a man is diseased and his brain becomes puzzled, and gradually he forgets himself and becomes a madman. He is gradually forgetting. So there is the beginning of loss, and there is one point where he forgets. That beginning point is called ahankar or false ego. Chanting the Mahamantra, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Ram Hare. Ram, Hare Hare, is the process not merely of putting an end to this false conception of the self, but it goes beyond that to the point where the pure spirit soul engages in his eternal, blissful, all knowing activities in the loving service of God. This is the height of conscious development, the ultimate goal of all living entities, now evolving through the cycles and species of material nature. Okay, so we'll stop here and we can discuss. Ishupro joined late. Huh? You would like to share some points? Yeah, Prabhuji, just have to make that Prabhupada is focusing that not only bare realization of that you being soul, it's not enough in this material world. You have to start working after realization that I'm soul. Okay, now what is the function of soul? The function is of soul is to serve Lord, the Mhm. supreme personality of Godhead. Otherwise, you will fall again in the misconception that I'm soul and I have different works to do. No, soul has only one work, that is to serve God. So this is we have to keep in mind after realizing. If one realize that is the only that is the no, that is a big task to for one that to realize that he is soul. कि उसके आसपास भी पहुंच जाए तो बहुत है. But still, if you realize that you have to start working with spiritual world, you have to start working for Lord, not for yourself again. Because if you have body, you will work for yourself and do the other things. But if you realize that this is soul, now you have different works and different things to do. Yeah, and you have to inquire for that. I like that point of Prabhupada. Thank you, Ishupro. Amazing.
Yes, Udit bro. Yes, Roji. Roji, first point is क्या है कि मतलब what is that thing that differs a human from animal is humans have Brahma Jigyasa. They can inquire why they're born as human, and that is important to understand. And second thing is why Bhagavad Gita is more advanced, because it is beyond the science of material nature, earth, air, water, ether. It is the science of the soul. That's why it is more advanced science. Yes, And bro. yes, Roji. And the third one is escapism will not work, but knowledge can work. लोग जो intoxication करते हैं, उन्हें लगता है वो 2-3 घंटे ना they are living blissful life, they are very happy living the life, but वो that is very temporary. ये point मुझे बहुत जबरदस्त लगा गुरुजी, मतलब ठोकने के लिए जो ये इंटॉक्सिकेशन करते हैं ना, कि मतलब एट लास्ट वो क्यों कर ही क्यों रहे हैं, उन्हें मजा आता, कहते हैं ना मजा आ रहा है ना। तो भाई वो if you live in the state of knowledge, then you will always be feel happy and मजा वाला feeling. So knowledge is very very much important. Yes, so that's all from my side. Thank you, Udit bro. Thank you. Yes, Anshu Mataji. Deepak bro is there. Okay. Yes, Deepak bro. Yes, Prabhuji. Prabhuji, I like the point when Prabhupada said that Gita begins when knowledge fails. So हम देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में कि हर नॉलेज का यूज करते हैं हर चीज पाने के लिए, मतलब नॉलेज का यूज करते हैं। फिर क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज वो हमारे हिसाब से नहीं होती ना, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर हम इंक्वायर करने लग जाते हैं। फिर हम थोड़ा बहुत इधर उधर से देखते हैं कि यार ये बॉडी की वजह से सब हो रहा है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि बॉडीली कौन जो फिर लोग होते हैं कि बॉडीली कॉन्सेप्ट छोड़ने की भूलने के लिए वो लोग हाई जाने के लिए मतलब इंटॉक्सिकेशन वगैरह लेने लग जाते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमको बॉडीली कॉन्सेप्शन को समझना है, उससे दूर नहीं भागना है, और सोल को समझना है व्हाट द सोल इज और व्हाट द ड्यूटी ऑफ सोल इज। तो हमें उस डायरेक्शन में जाना है, हमें नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाना है। तो दो तरह के लोग होते हैं, जो सब फ्रस्ट्रेटेड होके एक रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं और एक सही डायरेक्शन में जाते हैं। तो दैट्स माय पॉइंट इज या और फिर प्रभुपाद आगे भी तो ऐड किए। प्रभुपाद कह रहे कि जस्ट ये समझना है कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल, ये भी काफी नहीं है। एक बार हम समझ गए तो फिर सोल के लेवल पे हमें काम भी करना पड़ेगा, व्हिच मींस वी हैव टू एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज। या दिस प्रोजी ये संशय जी। तो जी आज मुझे भी ये पॉइंट काफ़ी अच्छा लगा कि जो प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि हमने अगर रियलाइज़ कर लिया ये सोल के स्टैंड पे, लेकिन उसके बाद फिर हमें उसके बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हमें एंटर करना पड़ेगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस पे करनी पड़ेगी। हाँ जी। मैं ये पॉइंट महाराज के लेक्चर में सुना था एक बार। गुरु महाराज कह रहे थे कि ये कह देना कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, काफी नहीं होता है, और उस लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। तो मुझे बार बार वही पॉइंट याद कर आ रहा था महाराज का, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हुए भी। थैंक यू अंशु माता जी। और कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? ओके, यस स्वाति। मुझे एक पॉइंट तो स्टार्टिंग में जो आया था कि व्हेन प्रभुपाद वाज टेलिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, की रीजनिंग पावर एनिमल्स में भी होती है। लाइक प्रभुपाद हैज गिवन द एग्जांपल ऑफ डॉग एंड कैट, कि हम डॉग को भी बोलते हैं हट, तो वो समझ जाता है कि वी डोंट वांट हिम, तो वो चला जाता है। तो वो से रीजनिंग पावर तो ह्यूमन बी में भी है, एनिमल में भी है, बट द डिफरेंस इज वी हैव द एबिलिटी टू इंक्वायर। तो एज अ ह्यूमन बीइंग तो हमें इंक्वायर फिर करना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी दोज क्वेश्चंस जिनके बारे में हमें इंक्वायर करना चाहिए, तो वो भी प्रभुपाद बता रहे हैं कि हु एम आई, क्यों हो रही है ये सब सफरिंग, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दोज सफरिंग्स। तो आइडियली क्वेश्चंस इस टाइप के होने चाहिए, चाहे हम फिर कितना ही मटेरियल लेवल पे काम कर लें। जैसे 8 एलिमेंट्स भी बताए जो भगवत गीता में आते हैं, कृष्णा बताते हैं, तो प्रभुपाद ने वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कोई वाटर के बारे में रीड कर रहा है, कोई फायर के बारे में, कोई इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर अंडरस्टैंडिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग। या एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, दे आर गोइंग टू सो मेनी माइल्स, दे आर कवरिंग एंड देन गोइंग टू मून, बट उन सब का एक्चुअली कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट वही है, वी वर्क फॉर द सोल। तो वो सोल के लेवल पे अगर हम काम करें एंड देन ट्राई
to understand this Krishna consciousness, कैसे भगवान को service दे सकते हैं, actually then we will fulfill the aim of this life. Thank you, Swati. Thank you so much. Yeah, correct, Mataji. हरे कृष्णा। Hare Krishna, Mataji. प्रभु जी, मुझे समझ आया कि लाइक दुनिया में ना 3 टाइप के लोग हैं। एक तो वो हैं कि जो एक फॉल्स ईगो में फंसे हुए हैं कि हमें कुछ मतलब ही नहीं है, वी आर मैटर, मतलब वो मैटर में बिलीव करते हैं कि वी आर जस्ट बॉडी, वही जो 7 एलिमेंट्स की हम तो इससे बने और इसी में खत्म हो जाना है, बस इतना ही पर्पस है लाइफ का। एक सेकंड टाइप के लोग वो है जो एक लेवल पे पहुंच गए हैं कि हाँ हम वी आर द सोल, लेकिन वो भगवान में ही बिलीव नहीं करते। वो सोचते हैं कि एक रोशनी आ रही है तो ठीक है, बट निराकार। उनका प्रोसेस इतना टेम्परेरी होता है कि वो मतलब मेडिटेशन में फंस जाते हैं। वो ये तो समझ जाते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, लेकिन उनका मेन पर्पस क्या आ जाता है? मेडिटेट करना, अपने आप को शांत रखना, पीस फैलाना। देन थर्ड आता है कि जो हमारा मेन पर्पस है, जैसा हमें एग्जैक्टली होना चाहिए, कि हम एक बार रियलाइज कर तो लें कि वी आर बॉडी, वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, बट वी हैव टू फॉलो दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल्सो। और मतलब ये हमें मतलब ये बोलते हैं कि कलयुग कितना इजी प्रोसेस हमें हमारे पास है, इट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी to go to the Bhagavad Dham, but still people are not willing to do that. तो मतलब इट इज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन कि हमारे पास इतना इजी वे भी है, बट स्टिल पीपल आर नॉट विलिंग। वो अपने आप को पता नहीं इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, इन सब में ही फंसा के रखा हुआ है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में। वो समझते हैं यही पर्पस है लाइफ का। मतलब मैं अगर अपने आसपास भी देखती हूँ ना, तो जैसे उधर तो में कुछ फॉलो करते हैं, तो पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि आपने इतनी एज से ही कर दिया, ये कोई बात थोड़ी ना है, अपनी लाइफ तो एंजॉय करो। तो बहुत ही मतलब कभी अब हंसी आती है, पहले थोड़ा अजीब लगता था, अब हंसी आती है अब डिवोटीज कि कहते हैं अरे अब तो ऑलरेडी लेट है, बाहर वाले हाँ, कहते हैं अब जल्दी कर दिया, अरे नहीं अभी बहुत लेट हो गए हम। उनका मतलब प्रभु जी मेन पर्पस ये है कि लाइक ड्रिंकिंग और बाहर पब्स वगैरह में जाना, दिस इज लाइक एंजॉयिंग लाइफ। मुझे मतलब बहुत अच्छे से याद है, जब मेरा फर्स्ट बर्थडे था शादी के बाद, तो उधर हमें वृंदावन लेके गए थे। तो मतलब मेरे रिलेटिव ये बोलते हैं वृंदावन कौन जाता है बर्थडे पे? तो एंड मतलब दे थिंक कि पब जाना चाहिए बर्थडे पे। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता था क्या ही बोले, बट नाउ आई एम हैप्पी इन माय प्लेस कि या वी आर डूइंग वेरी गुड इन कंपैरिजन टू अदर। You are blessed to have husband like Udit Prabhu then. उनकी वजह से आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए हो। यस प्रभु जी, ट्रू। आप माता जी कॉमर्स में वो पढ़ते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। यस यस, मैथ्स में पढ़ते हैं प्रभु जी, मैथ्स में भी होते हैं। Yes. जैसे एक मैथ में क्या होता है ना, क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो जैसे एक्स एक्सिस पर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस उसका पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो एक्स एक्सिस को आप मानो कि ये कृष्णा कॉन्शियस एक्सिस है, और वाई एक्सिस को आप मान लो कि ये मटेरियलिस्टिक लोगों की एक्सिस है। तो जो पॉजिटिव एक्स हो गया वो भक्त हो गए, पॉजिटिवली जो कृष्णा कॉन्शियस में लगे हुए हैं, जो भगवान को मानते हैं। और वाई जो एक्स हो गया, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस जो होगा वो नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। फिर वाई एक्सिस पे आप मान लीजिए कि जो मेटेरियलिस्टिक है ऊपर पॉजिटिव वाले, और नेगेटिव पे जो मेटेरियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि कितने टाइप के लोग होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। तो वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस कृष्णा को जो मानते हैं पॉजिटिव, और नेगेटिव एक्स का मतलब है जो नहीं मानते हैं। वाई एक्सिस हो गया, पॉजिटिव वाई का मतलब हो गया जो मटेरियलिस्टिक हैं, और नेगेटिव वाई का मतलब हो गया जो नेगेटिव जो मटेरियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो कुछ लोग, अब जो लोगों की कैटेगरी हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, कुछ सेकंड, कुछ थर्ड, कुछ फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो कृष्णा को मानते हैं बट वो मटेरियलिस्टिक भी हैं। तो जी सॉरी टू इंटरप्ट, तो जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट में एक्स नेगेटिव होगा क्या? यस प्रभु जी। नहीं, पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव ही रहती है प्रभु जी।
तो हम करेक्ट कीजिए अगर मैं सही नहीं हूँ तो, मतलब मुझे ऐसा ध्यान है कि नो प्रभु जी आर करेक्ट आई ओके। थिंक। उदित ब्रो, आप सब फॉलो कर पा रहे हैं? दोनों पॉजिटिव होंगे? ना प्रभु जी, मेरे को लग रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई ठीक है, पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होंगे आपके हिसाब से? सेकंड क्वाड्रेंट में प्रभु जी। ठीक है, तो आप उसको मान लीजिए फिलहाल, मतलब हमें सिर्फ कैटेगरी समझनी है, मैथ तो हम बाद में समझ सकते हैं। Yes, प्रभु जी। बेसिकली उस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं जिसमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। हम्म, तो एक लोगों की वो कैटेगरी होती है जो लोग कृष्णा कॉन्शियस भी हैं कुछ एक्सटेंट तक, बट वो मटेरियलिस्टिक भी हैं। हम्म, तो उसमें एक्चुअली हम काफी लोग आ रहे हैं मतलब मैं तो काफी हद तक आ रहा हूँ उसमें। तो वो क्या कर रहे हैं, वो मटेरियलिस्टिक भी हैं, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करना चाहते हैं, और उनको पता है कि हाँ कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, तो भक्ति भी कर रहे हैं वो। और इसमें ऐसे तो पता नहीं बहुत ही ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा, जो मतलब जो बिल्कुल वाई एक्स एक्सिस पे पड़े हुए हैं, तो उनकी भी कैटेगरी आएगी। तो ये मान लीजिए कि मिक्स हैं जो कृष्णा को मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कृष्णा को बोलते हैं कि लला, कृष्ण लला, ऐसे करके, मतलब भक्ति नहीं करना चाहते बट थोड़ा सा चीपली करते हैं। तो वो एक्स एक्सिस में थोड़े से और पॉजिटिव साइड में आके उनका उनका मतलब उनका नेगेटिव, उनका एक्स पॉजिटिव ज्यादा हो गया और उनका एक्स मतलब वो वाई वाई एक्सिस के ज्यादा पास आ गए। तो एक तरह से ये कैटेगरी हो गई, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए, फिर आप आते हैं सेकंड में जिसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ गया? प्योर मटेरियलिस्टिक, करेक्ट ना? जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, उनके आगे कृष्ण की बात करो तो चिड़चिड़ जाते हैं, कहते हैं अरे यार तुम चुप रहो यार, क्या? तो फिर वही टॉपिक लेके आ गए। प्योर मटेरियलिस्टिक लोगों की ये कैटेगरी आ गई जो इधर आती है। ऐसे लोग तो भरे पड़े हैं, बहुत ज्यादा है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना कम लोग आते हैं एक्चुअली, सेकंड में बहुत ज्यादा आते हैं जिसमें वाई पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है, करेक्ट ना? जिसमें जो बहुत मेटलिस्टिक है। फिर आता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में क्या होता है? जिसमें एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हो गए। तो इसमें कौन आएंगे बताओ? जो कृष्णा को भी नहीं मानते हैं और उनको ये भी पता चल गया है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है वो सही नहीं है, मतलब उसमें दुख है। तो इस कैटेगरी में कौन लोग आएंगे बताओ? जो मेडिटेशन वगैरह Philosophers. हाँ हाँ Philosophers. हाँ, I guess फिलोसफर्स आ गए, meditation. ब्रह्म कुमारी वाले। या आगे मायावादी लोग आ गए। जैसे जैनिज्म में नहीं होते, वो कपड़े वपड़े उतार देते हैं, सब ऐसे घूमते रहते हैं, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ ज्यादा फॉलो। तो वो लोग आ गए थर्ड कैटेगरी, थर्ड क्वाड्रेंट में ये लोग भी बहुत ज्यादा हैं आजकल मार्केट में। इन लोगों को पता चल गया है कि नहीं नहीं भाई, बहुत दुख है मटेरियलिस्टिक लाइफ में, बट ये कृष्णा को मानने को तैयार नहीं है आउट ऑफ फॉल्सी को। उनको लगता है हम ही भगवान है। तो ये सब लोग आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ तो उनको पता चल गया है कि दुख है, ये है वो है, और वो कृष्णा को ही सुप्रीम पर्सनैलिटी माने हुए हैं। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कौन आएगा फोर्थ में? मतलब प्योर डिवोटी। शुद्ध प्योर भक्त भगवान के। एग्जैक्टली। तो अब हम लोग किस में आ रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। प्योर डिवोटीज किस में आ रहे हैं? फोर्थ में। तो हमारा जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, तो जब हम आते हैं भक्ति में तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, और फिर हमें धीरे 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 वो एंगल चेंज करते फोर्थ में आना होता है। और जो सेकंड और थर्ड में है वो उस लाइन पे फंसे रहते हैं, नरक में चले जाएंगे, ऊपर नीचे, अप डाउन उनका चलता रहता है। तो भक्तों का ये अच्छा होता है कि वो इधर वाले एंगल पे आगे 180 डिग्री शिफ्ट हो रहा है उनका, धीरे धीरे धीरे। इसलिए तो कृष्णा कॉन्शियस क्या है, 180 डिग्री मूवमेंट है। मतलब कैसा है कि करंट के अपोजिट आपको बहना है। बाकी लोग जो सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड में है, वो तो आपका अपोज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनका तो अलग ही चल रहा है। तो हम लोगों को इसलिए थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में चल के फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है, करेक्ट ना? प्रभुपाद तो एक कोट में सुनना था, प्रभुपाद कह रहे थे जस्ट stay in Krishna ISKCON, you will become pure devotee, because that's what our movement is doing. ऐसे बोल रहे थे प्रभुपाद, just stay in ISKCON, don't leave ISKCON. करेक्ट बोला ना मैं प्रभु? जी प्रभु जी, मतलब आपने जो एनर्जी लगाई है टोटली, मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमें उस डायरेक्शन में फ्लो ही नहीं हो रहा जहाँ करंट जा रहा है उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। करंट कि उधर तो बहुत एकदम फेवरेबल है आजकल कलयुग में। तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उधर जी जाना। प्रभु मतलब आप जी। देख लो, फैमिली में आप इकट्ठे हो जाओगे ना, किसी ने माला देख लिया आपके हाथ में तो आपको कम देखेंगे, फिर दूर तब ज्यादा देखेंगे। मैं वही सोच रही जी थी प्रभु। एक्चुअली कि बट कितना टफ है, मतलब अपोजिट फ्लो करना।
like हाँ। the family in which we are तो living. तभी तो Family भगवान बोल है, रहे हैं, प्रभुपाद कह नहीं रहे, इसलिए जब उसमें भगवान का कोट बता रहे, कहते बहुत ही कम लोग मेरी तरफ आ पाते हैं, बहुत कम लोग हैं। इतना मतलब वो कुछ छोड़ना पड़ेगा मतलब हमें। पहले अपने मन से खुद से फाइट करना, प्लस फिर हाँ सराउंडिंग्स ऐसी है, एनवायरनमेंट ऐसा है, हाँ वो फाइट करना वेरी हाँ, डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तभी तो भगवान कह रहे हैं मतलब बहु जन्मनाम जन्म ना मानते, मतलब पहले तो बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, वो तो अटका हुआ है सेकंड थर्ड में ही, फिर एक बार वो आ गया तो फिर वो 180 डिग्री शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए बहुत ही कम लोग हैं इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। कोई 90 करते तो रोज ही दूसरे क्वार्टर में चले जाते। वो तो डेंजर हो गया मेरा ना। ठीक है, लिस्ट ऑफ फिर मेरा आज सर्जरी है तो सभी भक्त आशीर्वाद दो सब ठीक ठाक हो जाए, अभी जाके एडमिट होना है हॉस्पिटल में। ठीक है, लिस्ट ऑफ फिर वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी गौर वृंद की जय। जय।